फिगर्स फ्रॉम द मई 2025। सो मई 2025 से कितना DA राइज या फॉल करेगा उसको दोस्तों डिस्कस करेंगे। सो मई 2025 का जो एक्सपेक्टेड DA कैलकुलेशंस हैं अप टू ऑन एज यू नो दैट जो सी पिन फिगर्स हैं वो 30 मार्च को रिलीज़ हो चुकी हैं, announced by the government of India for the month of January 25 and with the assumptions of CPI for the month of Feb and March, उसको यहाँ पे assume करेंगे और जो expected DA है from the month of May 2025 उसको यहाँ पे फ्रेंड्स हम देखेंगे। So the CPI for the month of January 2025 announced on 30th of March 25 as 143.20 पॉइंट, जो कि डिक्रीज़ हुआ है by 0.50 from 143.70 points in December 2024. So on assumption if there is a decrease, तो हम यहाँ पे डिक्रीज ही assume कर रहे हैं of 0.5 points of CPI in both the months of Feb and March because इन्फ्लेशन यहाँ पे अभी कंट्रोल में है as per the Reserve Bank of India data. So we may expect that there would be a decrease. तो उस संदर्भ में यहाँ पे जो DA है वो दोस्तों डिक्रीज होगा 1.53% ओनली, and the total tentatively revised DA would be 19.67% from May 25 in terms of the 12th BPS. उसके बाद another scenario if we take on assumption if there is no increase or decrease in any points of the CPI in both the months of Feb 25 and March 25, on this assumption we may expect that there would be a decrease of 1.03%. तो तब यहाँ पे नियर बाय 1% का डिक्रीज आपको देखने को मिलेगा and the total tentatively revised DA will be 20.17% from May 25 in terms of the 12th BPS. उसके बाद अगर हम देखें थर्ड assumption if there is an increase of 0.50 points of CPI in both the months of Feb 25 and March 25, अगर यहाँ पे 0.5% की वृद्धि हमें देखेंगे, so on this assumption we may expect that there would be a decrease of 0.53% DA only and the total tentatively revised DA will be 20.67. so यहाँ पे जो कॉमन सिनेरियो है वो ये है दोस्तों, जो DA है वो यहाँ पे फॉल ही कर रहा है in all the scenarios. So that's not a good news because if we see in the